Now, students, we are going to discuss the second part of Glimpses of India, that is Korg. Korg is a coffee country. It is famous for its rainforests and spices. Basically, in this chapter, the writer has described this coffee country, the culture of this coffee country, the tradition of this coffee country, the people of this coffee country has been described by the writer. In other words, we can say we are going to get the description of Korg, which is a coffee country and famous for its rainforests and spices. Before the beginning of this chapter, we will see the introduction. The lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of Karnataka and its people. So, where is this place? You see, this is a part of Karnataka. The place has an amazing weather throughout the year with enough rain during the monsoon season. The people of Korg are known to be one of the bravest. That is very important. People of Korg are one of the bravest, and coffee is the main crop grown in this region. A variety of animals can be found here with the place is surrounded by beautiful Brahmagiri hills, islands, and Tibetan settlements. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉर्ग, जो कि सेकेंड पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। कॉर्ग बेसिकली एक कॉफ़ी कंट्री है जो फेमस है रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए, और ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। और राइटर इसके बारे में हमको बताता है, यहाँ के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, यहाँ के पीपल कैसे होते हैं उनके बारे में बता रहा है। और यहाँ का जो मेन क्रॉप क्या है, कॉफ़ी है। इन सब चीज़ों की जानकारी जो है राइटर हमको इस पार्ट में दे रहा है। यानी बेसिकली हम कॉफ़ी कंट्री जो कॉर्ग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नाउ सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ this part, that is Korg. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. Drifted from means being carried along gently by air. Martial means having to do with war. So here the writer is describing the place. Where is this place? You see, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven. So writer has told, or he describes Korg as a piece of heaven that must have drifted, been carried from the kingdom of God. So writer is saying that Korg is a piece of heaven that has been carried from the kingdom of God. This land of rolling hills. What kind of hill? Rolling hills is inhabited by a proud race of martial men,
beautiful women and wild creatures. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices, and coffee plantations. Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. So canopies, that is the roof-like covering made of trees that form a shelter. That is canopy. Prime here means best. Invigorating here means strong. So again, as I told you that this part is only the description of Coorg. So here again the writer is saying that Coorg is the smallest district of Karnataka, and here we find evergreen rainforest, spices, coffee plantations. These things are found where? In Coorg. And what is Coorg? It is the smallest district of Karnataka. Evergreen rainforests cover 30% of this district. So Coorg is the smallest district of Karnataka, and evergreen rainforests cover 30% of the district. And during the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. So during monsoon, no one comes here. The season of joy commences from September and continues till March. If anyone wants to enjoy the beauty of Coorg, he can go in the month of September to March. The weather is perfect with some showers thrown in good for measure. The air breathes of invigorating coffee. So weather is perfect for the coffee plantation. The weather is perfect for coffee plantation. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. So यहाँ पे राइटर ने बताया कि कॉर्ग है क्या और कॉर्ग कहाँ स्थित है. तो राइटर कहता है कि मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में क्या है, एक हेवन है जो कि गॉड के किंगडम से लाया गया है. हाँ, और ये रोलिंग हिल्स, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, स्लोप है. यू सी दिस. जो रहने वाले कौन कौन वहाँ रहते हैं इस स्थान पे? मार्शियल मैन रहते हैं. ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स आर द पार्ट ऑफ दिस कॉर्ग. कॉर्ग क्या है? एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, जहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन है. और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर करता है 30% इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का. इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% भाग क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. मानसून में लोग यहाँ नहीं आ सकते, और सबसे अच्छा मौसम है यहाँ आने का सितंबर से मार्च तक. जो कोई भी एंजॉय करना चाहते हैं इस स्थान का, इस ब्यूटीफुल प्लेस का, राइटर ने कहा कि ये लैंड ऑफ गॉड से आया है. लैंड ऑफ गॉड से आया हुआ एक भाग है कॉर्ग. जो कोई भी इसकी ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता है वो सितंबर से मार्च के बीच में विजिट कर सकते हैं. और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए यहाँ का वेदर बिल्कुल अनुकूल है. और यहाँ पर एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी मीन्स यहाँ पे कॉफ़ी उगाने का, कॉफ़ी प्लांटेशन का सबसे उपयुक्त
स्थान है, मौसम यहाँ मिल जाता है। कॉफ़ी स्टेट और colonial bungalows यहाँ पे हैं। So here again you see only the description of beautiful place, beautiful district of Karnataka, that is called